Hello students, Jai Swaminarayan. Welcome to BFA Swaminarayan Vidya Mandir. Today we are going to learn Standard 2 English NCERT Funny Bunny Part B. So today we are going to solve our remaining exercise. Okay? आज हम हमारी जो बाकी की एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए मेरे साथ कहिए. से अलाउड, आउच, पाउच, काउच, फॉलो, हॉलो, स्वालो, downtown frown, break clay sway. Let's write. आपको लिखना भी है. ओके, सर्कल द ऑड वन आउट. हमें क्या करना है, जो भी ऑड है उसको सर्कल करना है. लाइक दिस इज अ बन, सन, फन, गन और वन. सो विच वन इज अ ऑड वन? This one is odd one because bun bun, cun sun, fun fun and gun gun. देखिए सब में कॉमन लेटर्स कौन से है? यू एन यू एन यू एन यू एन, और इधर एन ई है. राइट, दैट्स व्हाई वन इज अ ऑड वन. नेक्स्ट वन इज बैड, बी ई डी बैड, एफ ई डी फैड, लैड, सेड और रैड. सो सेड इज अ ऑड वन. ही, मी, बी, टी, वी. सो ऑड वन इज टी. वे, से, हे, पे और दे. So odd one is they. Find the opposite of the given words and make sentences. हमें क्या करना है? Find out करने opposite और उसके sentences बनाने. Like क्या होता है? तो fat का opposite है thin, right? So this is a thin boy. Then fall का opposite क्या आएगा? फॉल. फॉल का मीनिंग होता है नीचे गिरना, तो फॉल का अपोजिट क्या आएगा? रेज. राइट, तो हम क्या कह सकते हैं? द सन रेज इन द ईस्ट. सन कहाँ रेज होता है? ईस्ट साइड में. राइट, देन स्टार्ट. तो स्टार्ट का मीनिंग होता है कि कोई भी एक्शन स्टार्ट करना, तो हम क्या कहेंगे? स्टॉप. वी शुड स्टॉप एट रेड सिग्नल. हमें रेड सिग्नल पे रुकना चाहिए. स्टॉप. राइट, देन कम. सो कम का ऑपोजिट गो. आई विल गो टू मार्केट, मतलब मैं मार्केट जाने वाला हूं. आई विल गो टू मार्केट. देन द बिग. बिग का ऑपोजिट स्मॉल. राइट, सो द करेक्ट आंसर इज अंश लुक्स लाइक अ स्मॉल डॉल. मतलब कैसा दिखता है? स्मॉल डॉल की जैसा दिखता है. राइट, तो ये थे हमारे वर्ड्स. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. अब ये क्या है? सारे वर्ड्स. अब देखिए सारे वर्ड्स दिखाई दे रहे एक जैसे, बट उसके मीनिंग डिफरेंस हो रहा है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. आई रीड अ फनी स्टोरी ऑफ अ फनी रैबिट. वन डे अ नट फेल और फॉल. सो फॉल on his hand. He thought that the sky is आएगा, was आएगा. ये स्टोरी हो गई है. राइट, तो क्या आएगा? The sky was falling. The sky was falling, मतलब sky गिरा. राइट, so he go और went. go आएगा. go to tell the king. On the way he met different animals. all of them joined him. At last they met a clever fox. It took them to a forest and ate them all up. Ate them all up. अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? बिकॉज ये पास्ट की स्टोरी है. राइट, ये स्टोरी हो गई. दैट्स व्हाई. रीअरेंज दिस वर्ड्स टू फ्रॉम सेंटेंस. हमें क्या करना है? सेंटेंस अरेंज करने. चलिए. वन फनी बनी फेल अ नट वन डे. तो क्या आएगा? वन डे. क्या आएगा? वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी. ओके, सेकेंड वन. फॉलिंग डाउन द स्काई इज सेड फनी बनी. तो क्या आएगा? फनी बनी सेड
The sky is falling down. Okay. Third one, king I must the tell. क्या आएगा? I must tell the king. And fourth, lives here the king. The king lives here. ओके, तो आपको सेंटेंस को क्या करना है? रीअरेंज करना है. ओके, चलिए आगे चलते हैं. Change only one letter of each word and make another rhyming word. आपको क्या करना है? राइमिंग वर्ड्स बनाना है. ठीक है, तो फेल टेल, तो किंग सिंग, सुन मून, बैट मैट, वे से, देन डाउन फाउंड. राइट, ऐसे आपको राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. लुक एट द पिक्चर्स, गिव द एनिमल द राइट नेम्स. ये कौन है? फॉक्स, डक, देन चिकन्स. राइट, अब आपको क्या करना है? आपका भी जो फेवरेट एनिमल है उसका आपको एक पेज में फोटो स्टिक करके उसकी 10 लाइंस में इंफॉर्मेशन लिखनी है. ओके, और ये आपको एजुक्लाउड पे अपलोड करना है. आई होप सो यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस लेक्चर. थैंक यू. जय स्वामीनारायण. and you get all the answers of this question below this PDF. Okay, thank you class. Jai Swaminarayan.